Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. Myself, Suprabha Amit Kshatriya from Parul Institute of Engineering and Technology Diploma Studies. And today we are presenting a webinar on fire and safety, which is presented by the expert Mr. Amit Arvind Kshatriya. And I'm super excited about to have you all for this webinar, and I welcome you all on behalf of Parul University. We have an amazing entrepreneur today. Because he is going to share all his knowledge about his life journey and fire and the life safety. The special thing about today's expert that he is action taker, and today's session is going to put to unforgettable for all of us. And now I'm going to give a short information and short uh, introduction about our expert. Mr. Amit Arvind Kshatriya is certified in management of change in process safety, which is UK certified, CPD UK certified, FAW KDHA Dubai government approved, uh, applied principles of safety management system, which is UK certified, IOSA certified, behavioral based safety management, control of substances, which is COSHS, disaster management with advanced emergency response principles, UK certified, a train the trainer, road safety trainer, out of the box thinker, and a leader, a true leader. So now I am going to invite Mr. Amit Arvind Kshatriya to start our today's session. And if we have any questions during the session, we will discuss about that after once the session ends. Mr. Amit Arvind Kshatriya, I am welcoming you on behalf of Paro University and the Diploma family. Thank you so very much, Suprabha ma'am. Thank you so much, your HOD, your staff. Thank you so much, directors of Paru University. It's my honor to be presenting a webinar today on a topic called fire and life safety. So thank you so much, ma'am. Good morning, students. Good morning, friends. Good morning, staff who all are joining our webinar sessions. Your University has, mantra. That mantra is be here, be vibrant. Actually, it means that what your college is doing today, your college is creating n numbers of webinars. That webinars is making you a truly vibrant. So we have to be, very much thankful to your university first. Now, we are coming to our webinar as ma'am introduced me as Amit Kshatriya, trainer, auditors, working with many companies. So students, friends, we are going to start our webinar today. Let me say you the topic, what we are going to discuss today. Our topic is fire and life safety. As everyone knows, what situation today we are facing it, right? Because of that COVID-19. And yes, we have n numbers of situation, disaster situations, what happening due to natural, and there are many situations which is man-made. And that man-made situation, what it is fire, which is happening. I know every one of you might be knowing it, that there are n numbers of fire incidents happening in Gujarat as well as are in India, as well as whole world. On an approx, I will talk about 2019. On an approx, there is 200, approx 200 fatal incident. Fatal means that 200 fatal incident happen in our industry because of fire and other source of things. So guys think that fire plays a major roles in life and death, right? So here we should understand what is fire, how we can prevent it, what are the precautions we need to take it to control it and to save us, right? See, I'll say you why there is a need of fire understanding, why there is need to prevent from fire, why there is need we should take precautions while handling with fire and all. See, everyone must be aware of incident happened in May 2019 at Surat. There at Takshila complex, 20
two students have died, and many students, they were, living with life and death. Second thing, recently, go back, before 5 to 10 days, we have incident at COVID-19 hospital in Ahmedabad. I can't name that hospital name. It's XYZ hospital. That hospital where we have lost 8 COVID patient death. That is because of fire. So we need to understand there are many incidents happening related to fire, and that fire makes person die, major injury or minor injury. That is biggest loss to us and in property. So we need to understand the concept. Ki what is fire? How does it catches? How does it spread? What are the things we need to keep in mind while dealing with it? All right. So there are some things which we have to keep in mind. Now, this topic will help you to minimize the danger of life and the property from fire. Basic understanding of fire is important for all of us. Even if you are students, why I'm saying you? Because we are going into malls, we are going into theaters, we are going into institutions, we are going here and there, and everywhere. See, there's high rise building is there, right? Industries are there. Many everywhere there are no risks of life and death. So major concern is fire. So we need to understand actually what fire is. See, we have students from different department. I've came to know we have first year students, we have third year students, students of every branch. We might be having students from electrical, we might be having from chemical, electronics, infrastructure, architecture students, or any branches. So we will understand actually what is fire, right? And be aware and just think in that way. You have seen a fire somewhere, fire, it catches a fire, some reasons are happening, some things are happening. So we need to understand step by step. So now we are going to start a simple thing, basic understanding of fire. What is fire? See, my friend, fire is a combination of three things. Fire is a combination of three things. We should understand very clearly. First, it is fuel. Fuel can be paper, wood, plastic, oil, petrol, diesel, kerosene, highly flammable liquids. It can be gaseous product. It can be flammable metal. So these are the fuels. So fire is a combination of three things. First is fuel. Second thing is oxidizer. Oxidizer means oxygen or air. Third thing is source of ignition. Third thing is source of ignition. Fuel, source of ignition, and oxidizer. If these three things get combined, when these three get combined, it's form a chemical reaction that is tetrahedron. Then there is fire. Fire catches. So these three, if it's a not in proper way, if fuel contains more or air contains something is there, if three things matches or chemical composition occurs, then there must be fire. Now, this is a tetrahedron, what we are talking about. Basic concept of fire. I'll say to all my friends, all my students, see basic things. If I'm talking about fire, you have to think one thing in mind, everything, types of fire extinguishers, stages of fire. I'm talking very basic things. You have to keep that four in a mind. First, I said you fire. Fire is a combination of what? Fuel. Second thing is source of ignition. Third is oxidizer. Chemical composition is a tetra, means four. Now, right, four. That is tetra, right? Now, we have stages of fire. We have to understand, right? That is stages of fire. There are four stages of fire. First is ignition point. That's fire going to ignite it. That is ignition point. Second thing is growth. It's growth is there. Of fire, will be growth. Second thing will be fully developed, huge fire, and last will be decayed, totally destroyed. Now there are four stages of fire. First is ignition. Second thing is growth. Third thing is fully developed, and fourth will be decay. Now we have seen how fire catches, that is tetrahedron. We have seen stages of fire. Now we have to understand how fire spreads, right? I'm sitting in one room. Understand, I'm sitting in one room. You can see fire is on top floor. Fire will be in other room. Fire will be spreading like anything. So spreading of fire is of four types. First,
There is direct heat transfer. First is how fire spreads. There is indirect, series connection. You have curtains over here, it's spreading through a curtain, that is direct heat transfer. Second is conduction. Conduction means through a channel or through a medium. Third, we have convection. Convection means because of hot air. If you're sitting here and because of some hot air are coming, because of that in other room or top of the building, top of the floor, there can be a fire. So first is direct heat transfer, second is conduction, third is convection, and fourth is because of radiation. That is the reason. If you go at petrol pump, if you go at CNG stations, gas station, I mean, everywhere the people, they are stopping you. Please don't use your mobile phone, right? This is the main reason why they stop us of not using a mobile phone. So there is four reasons of spreading a fire: direct heat transfer, conduction, convection, and fourth thing is a radiation. Now fire got catches. We came to know stages of fire. Difference how fire is spreading. Now, if we need to extinguish it or we need to stop the fire, what we have to do is, I have said, you see, there are three components because of what fire came, right? So we need to stop one component from that three component. Now there is a process. If that fuel is going, right, if fuel is there, if we are stopping that fuel contain, that process is starvation. When we are stopping a fuel, first component, then it is starvation process. Second thing is, when we are stopping a heat, we are cutting off a heat, that process is a cooling process. Then when we are cutting off that oxygen and all, that process is smoothing process. Now let's take an example. You have seen everywhere, it's in complex or it's in building or it's in theater. I went there and something happened over there, fire catches, right? That I didn't care and that fire came on me. So what I have to do? When that fire catches on me, I have to be very alert. The person who is going to rescue me, he has to be very much cool, calm, and confident. He has to see that, oh, something happened to this guy, so I have to follow some rules and regulations. So what it is try to make that person calm and say them stop him, right? See, if he's running, that oxygen supply is more, he'll get more fire and fire. So we have to make them stop. Once it gets stopped, say him to get drop him, say him to go lay down, stop, drop. And third thing what you have to do is, you have to say him, please keep your hand on your face, and please roll it on. So to protect a person from fire, if the person body catches a fire, you have to say them three things: stop, drop, and roll, right? So there we are going to cut off oxygen supply. That process called a blanketing process. Or else, if you have something, blanket, if you have something good cloth over there, you can do it from back. You have to go, don't go in from front, go from back, take that blanket or bag from him and try to drop him and roll that person, right? So this is what we have to do it in terms of stopping a fire, right? I've said you different method. When you're cutting off a heat, that is cooling process. When you're cutting off a fuel, that is starvation. When you're cutting off oxygen, that is smoothing. And when you're cutting off that's fire from person body and all, that is blanketing or layering process. Now, see guys, you might have seen in your college premises, complexes, buildings, or where you are staying high-rise building, you might have seen many fire extinguisher, like fire ka dabba lal color ka. If you have seen, right, lal color ek dabba hota hai. There are different types of fire extinguisher. But being a first year or third year student, let us understand basic of that. Going to basic, that there are four types of fire extinguisher. One is water type and a pani wala. Second thing is foam type, like sabun ki chhaak. Third, we have DCP, means dry chemical powder. Third is DCP, means dry chemical powder. And fourth thing, we have CO2. We have other types of also, halon, other types of also. But we should go into basic. Water type, foam type, CO2, and dry chemical powder. Now, a water type fire extinguishers, where we are going to use that. That water type fire extinguishers, we are going to use
that on only solid fire, only solid fires. I'll explain you what different types of fire is. Now, let us understand first what are different types of fire. First, there is class A fire, class B fire, class C fire, class D fire. Class A, class B, class C, class D. Class A fire means a fire on wood, plastics, means all solid combustible material that are into classification A fire. Class B fire. Class B fire means a fire on flammable liquids, highly flammable liquid, petrol, diesel, kerosene, some spirits and all. That is class B fire. Class C fire. A fire catches on gases, and because of electrical fire, gases like LPG, CNG, compressed natural gas, LNG, LPG, and gas fire related to electrical things, that is into class C fire. We have one more fire, that is class D, that is flammable material. All right. So we have four types of fire. Class A, paper, lakdi, wood, solid substance. Class B, petrol, diesel, kerosene, highly flammable liquids. Class C, gaseous product and fire due to electrical things. And fourth, we have fire with metals. All right. These four types of fire. Now I have said you we have four types of fire extinguisher. First thing is water type. Second, we have foam type. Third, we have dry chemical powder. Fourth is CO2. So now we have to understand where we are going to use that water type of fire extinguisher. A water type of fire extinguisher we are going to use only and only on solid substance like wood, paper, plastic, curtains and all. We can't use water on electrical circuits, electrical appliances or electrical product. So keep in mind, we are not going to use water on electrical things. Second thing, we are not going to use water on oil things like petrol, diesel, kerosene, because density of oil is less than water. If you are going to throw water, if you're going to use that water, that oil level will come up and there will be huge spread of fire. So we have to keep in mind when we are using a water in our premises, in our home, or I can say in your institutes and anywhere you have found fire. So you have to keep in mind that water we are going to use only on solid substance like paper, wood, and plastic. Now, second thing we have, foam. Major chemical industries, oil and gas industries, major of them they are using foam fire extinguisher. It comes like from 1 kg fire extinguisher till 200 kg, 75 kg, 200 kg. That fire extinguisher we have in our industries, right? So there they are going to use that. Third thing, we have DCP. DCP is dry chemical powder. Please understand, in your college itself, in high-rise building, if you go into theaters, into malls, everywhere, right? You have seen a fire extinguisher where it is like, that squeeze type. You have seen that gold color का एक pressure gauge होता है, ऐसा दबाने वाला होता है. तो maximum that is DCP, dry chemical powder. If you're going to see that as a dabane wala squeeze, there will be like pressure gauge over there. So please understand that it is dry chemical powder. And in that dry chemical powder, they have mentioned the name. The name is ABC. They have mentioned the name ABC. ABC means we can use that fire extinguisher on class A fire, class B fire, and class C fire. So its name is A, B, and C. And that powder is monoammonium phosphate. We can use that fire extinguisher in all this fire, class A, class B, class C. And it's very easy to use. I'm going to say you how you have to use that fire extinguisher. So we have to understand everywhere you can find ABC type fire extinguisher, that is powder form. Now we have one more fire extinguisher, that is CO2. You might have seen that fire extinguisher in your labs, electrical rooms where there are n numbers of panels room, electrical room, transformer room. There will be CO2 type fire extinguisher, that is carbon dioxide. That CO2 type of fire extinguisher we majorly used. We are using it at electrical appliances, panels, and all electrical things. See, guys, there is a fire extinguisher. What I have said you, that is DCP. That DCP we can use on electrical thing, but
But if we don't have CO2, if we don't have CO2 and we have only DCP, that DCP we can use on electrical thing. But if we have CO2 with us, we should not use DCP fire extinguisher, because that fire extinguishers will damage the property. It can damage the panels, it can damage our circuits, it can damage our appliances. So we have to keep in mind, electrical student, you have to keep in mind, for you, CO2 is very important. And one more thing, we have, very automatic systems also. If you see at CNG station, many panels, they have CO2 flooding system. They have CO2 flooding system. They have flame detector. With that, there is attachment of flame detector with PLC command. If something happens, PLC will send a signal to them, because of the flame detector. It's going to detect that. It will send that signal to that detector, and automatically that CO2 system will blast, and that moment it will extinguish the fire. What it's going to do? It is going to extinguish the fire. As of now, friends, we have seen fire, tried and I've said. Then we have said house fire, stages of fire, 4 types. Then we have said spreads of fire. We have said classification of fire. We have discussed types of fire extinguisher. We have discussed where we are going to use that fire extinguisher. Now, if you're going to an institution, this is a situation, these are new normal things now. If you go to a mall somewhere in future, just try to visualize this, try to see the fire extinguisher where they are kept. Just see four thing in that. First thing, does that fire extinguisher is seal packed? There is a seal of, like steel or something, seal is there or not. Second thing, we have to see that pressure gauge. Like watch, घड़ी की dial की तरह एक pressure gauge होता है. In that pressure gauge, there is red, green, and red color. What you have to notice is that needle at that in pressure gauge, that needle, it has to be on green color. If it is on red color down, it is on red color up, that means it is of no use, just for namesake they have kept that. So if you found somewhere like this, go and discuss with the manager. If you find in your institute, go and talk to staff कि मैडम ये फायर एक्सटिंग्विशर है ना, अगर फ्यूचर में अगर आग लग गई ना तो इसका कुछ काम नहीं आने वाला है. So we have to call that, जिसको हमने AMC दिया, annual mental contract जिसको हमने दिया है, we have to call them and we have to get it maintenance or we have to get it repaired. So you have to say that. The first thing, you have to check seal pack. Second thing is you have to check the pressure gauge. The needle has to be on green color. Third, you have to check that hose. फायर एक्सटिंग्विशर का आप देखोगे तो एक हॉस भी है, पाइप, सिंपल लैंग्वेज पाइप. वो पाइप कहीं से कटी या क्रैक नहीं होनी चाहिए. द पाइप इट्स क्रैक or it is loosened, so please don't use that because it is pressurized powder, तो सही तरह से नहीं निकलेगा, right? So you have to keep in mind, it has to be no crack, it should be not fully tightened properly, neither otherwise it won't work properly. Fourth thing, you have to see there will be a label, एक label लगा होता है, validity of that things, एक validity उसमें लिखी होती है, तो आपको वो भी check करना है. तो 4 things you have to check in that. First is for seal pack. Second thing is pressure gauge. Third thing is hose pipe, and fourth thing is validity due date. So I'll say, you student, majorly people in our Baroda, we have LPG cylinder at our home. We don't have gas connections. If you see in Surat, if you see in Ahmedabad, in other cities, they have gas pipeline connection. Yes, we do have, like Baroda Gas Limited, GAIL Gas, they are giving that gas pipeline. So the person who is having cylinder at their home, they have to think twice, because there are many incident and accident happening that is because of LPG cylinder. Now I'll say you, guys, today itself, do one thing. Go and see your gas cylinder, LPG gas cylinder. An LPG gas cylinder, you have expiry date. Again, I am saying you, on LPG gas cylinder, we have expiry date. You can see 3 straps, 3 straps लगे ऊपर राउंड होता है और वहां पे 3 एक स्ट्रैप्स है. उन तीनों स्ट्रैप्स पे आप जाके देखोगे तो वहां पे ABCD में समथिंग कुछ लिखा रहता है. I'll say you, ABCD 4 चीज में डिवाइड होता है. अगर वो पट्टी पे A लिखा हो, I'll say there is 12 month, 12 महीने होते हैं. उस 12 महीने को they have divided into 3 months quarterly, right? A will be March, January, February, March. अगर A लिखा हो तो दिमाग में कॉन्सेप्ट डालने का मार्च का. अगर B लिखा हो
अप्रैल मई जून, तो हमें जून दिमाग में रखना है। ए मीन्स मार्च, बी मीन्स जून, सी लिखा हो तो सितंबर, डी लिखा हो तो दिसंबर। ए मार्च, बी जून, सी सितंबर एंड डी इज दिसंबर। गाइस गो एंड सी टुडे, अगर आपके उस स्ट्रेप्स में लिखा हो A17, दैट मीन्स मार्च 2017 में आपका सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है। ऐसे सिलेंडर को हमें घर में यूज नहीं करना है। इट्स वेरी हैजार्डियस, इट कैन कॉज लाइफ एंड इट कैन डैमेज एवरीथिंग बॉस। अगर लिखा हो B20, आई एम गिविंग एग्जांपल, अगर लिखा हो B20, तो अंडरस्टैंड गाइस, मीन्स जून 2020 में एक्सपायर हो चुका है। अगर लिखा हो D20, तो अंडरस्टैंड है, D20 मीन्स दिसंबर 20 में एक्सपायर होने वाला होगा। तो फर्स्ट थिंग, इन आवर home premises you have to see a cylinder with expiry date. Second thing, हमारे घर में जब सिलेंडर आता है तो यू हैव टू सी दैट जो डीलर हमारे घर में सिलेंडर लेके आता है, यू माइट हैव बीन सीइंग इट, देयर विल बी मेनी डेंट मार्क, बहुत सारे डेंट मार्क लिखे लगे रहते हैं। तो वैसा सिलेंडर भी हमें घर में नहीं लेने का। तीसरा, बेस, सी द बेस, वो बेस भी अनइवन होते हैं, वो हमें अनइवन बेस भी सिलेंडर नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। तो गाइस प्लीज बी अवेयर, आई विल से यू इन अहमदाबाद there is a area called Chandola. Before 2 years, because of cylinder, 1,000 houses was fully burnt. Because of one expired cylinder, 1,000 house was fully burned. So we have to take care. जब सिलेंडर लेते हैं डीलर से, जब हमको हमारे घर पे देना आता है, हम लेने जाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, अदरवाइज हमारे लिए बहुत डेंजर है। तो जैसा मैंने आपको बोला फायर एक्सटिंग्विशर चेक करना है, वैसे हमारे घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है आज ही उसे चेक करें और आपकी मॉम को, आपके सिस्टर्स को, आपके फैमिली मेंबर को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि वी हैव टू टेक केयर। तो उसमें एक सिलेंडर में एक और चीज, यू नो वी हैव हॉस, हमारे पास वो रेगुलेटर से सिलेंडर में स्टोव में लगा रहता है, वो होस को भी आपको चेक करना है, कहीं से कटी क्रैक नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से कटी क्रैक है तो यू हैव टू से टू योर मॉम, मॉम प्लीज, वो कम पैसे में आती है, 150-200 रुपए में आती है समथिंग, प्लीज चेंज इट, because you know we have mindset, हम change करते नहीं है। what we do, we take a something, you know, knife or something, we cut it and we again apply to it. That is a danger for us. So we have to keep in mind these small things we have to apply at our home. Second thing, I have said you about gas cylinder. Second thing, guys, अगर हम हमारे घर की बात करेंगे, what electrical GEB, and you guys are electrical student, you might be knowing difference between ELCB, MCB. ELCB होता है, MCB होता है या RCCB होता है। गवर्नमेंट कंपल्सन करती है कि हर एक के घर में देयर शुड बी ELCB, यानी कि अगर कुछ भी लीकेज करंट में होगा दैट विल गेट फ्री, और हम आग लगने से और करंट लगने से बच जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। लेकिन आप जाके देखिएगा, आप खुद पर्सनल रियलाइज करेगा, देयर माइट बी मेनी होम्स, कितने सारे घर हो, इवन हमारे घर में भी आप देखिएगा, देयर विल बी नो ELCB या RCCB हमारे पास नहीं है। और यही रीजन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हादसे हुए हैं, बहुत सारे होम प्रीमाइसेस में आग लगी है, दैट्स लीड टू अ फैटल, यानी कि मौत ले जाता है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, अच्छी तरफ से उनको गाइड करेगा कि पापा, मॉम, इफ यू डोंट हैव ELCB इन आवर हाउस, नो वी हैव टू डू दैट, नहीं तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है। नाउ एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे घर में जो सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ है फायर का, वो है इलेक्ट्रिकल। यू नो इलेक्ट्रिकल, आप हमारे स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे, बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ पे। तो गाइस आपको देखना है, हमारा सबसे बड़ा सोर्स है और 90+% इंसिडेंट हो रहे हैं, वो एक ही रीजन है, वो उसका मेन सोर्स है इलेक्ट्रिकल थीम। कि इलेक्ट्रिकल थीम में ऐसी बहुत सारी चीज है, लूज वायर आप बोल दो, इंसुलेट वायर नहीं है, 2 पिन 3 पिन नहीं होता है, वायर कटेज होते हैं, वायर हैंगिंग होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल थिंग्स, राइट, जिसके कारण स्पार्क होने के चांसेस है, जिसके कारण आग लगने के चांसेस है। तो ये सब चीज हमें ध्यान रखनी होगी। पहला मैंने बोला गैस सिलेंडर से, दूसरा मैंने बोला होम प्रेमाइसेस में। आपको एक चीज और दिमाग में डालना होगा, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड। मैं भी बाद में इंडस्ट्री रिलेटेड आता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं होम प्रीमाइसेस की बात कर रहा हूँ। तो ये होम प्रीमाइसेस में ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट यू हैव सीन टिल नाउ। मैंने आपको अभी तक बताया है 4 टाइप्स ऑफ फायर, 4 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग कैसे लगी, आग कैसे स्प्रेड हुई, आग को कैसे बुझा सकते हैं, क्या चीज, 4 चीज उसमें चेक करनी है। अभी हम देखेंगे एक जो फायर एक्सटिंग्विशर आप जहां भी देखते हो,
वो फायर एक्सटिंग्विशर को आपको कैसे चलाना है, वो फायर एक्सटिंग्विशर आपको कैसे चलाना है। देयर इज अ मेथड, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड पास। एक पास मेथड है, पास टेक्निक है, जिससे आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को चला सकते हो। तो आई हैव सेड पास, दैट इज फॉर PASS। हम बोलते हैं ना मस्ती मस्ती में पप्पू पास हो गया, राइट? तो वैसे ही PASS। P मीन्स व्हाट? मैंने आपको बोला था जो हमारा सिलेंडर है वहां पे प्रेशर गेज और सील लगी रहती है। तो सबसे पहले जो सील लगी है, आग लगी है, आपको बुझाना है। तो सील इज दैट वी हैव टू ब्रेक दैट सील। हमें सील को जोर से झटका मार के तोड़ना है। सील जैसे टूटी, फर्स्ट इज पी। पी मीन्स व्हाट? यू हैव टू, साइड में पिन लगी रहती है, you have to pull that pin. There is a seal, break the seal over there. First is P. P means what? Pull the pin. Pin को खींचा, जैसे पिन को खींचा। दूसरा है A. First is P, pull the P. Second is A. A means what? जो हॉर्स है, जो पाइप उसके साथ लगी है, वो पाइप को आपको फर्मली पकड़ना है। Hold it firmly from front, not from back, not from middle. You have to hold it from front. You have to pull the pin. Second thing is aim. A से aim. Aim means aim at the base of fire. जहां आग लगी है ना, उसके बेस पे हमें करना। सिंपल भाषा में उसके तरी पे करना। अगर आग की लपट में आप वो चलाओगे ना ड्राई केमिकल पाउडर, तो कोई मतलब होने वाला नहीं, वो आपको नहीं बुझाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू टेक दैट हॉस पाइप and hold it firmly from front, pull the pin, aim at the best. Third is S. S means squeeze. हमें दबाना है, जो उसको ट्रिगर जैसा है वहां पे उसको हमें दबाना है, that is squeeze. And last is हमें एकदम फॉर्मली पकड़ के स्ट्रेट नहीं खड़े रहना है। लास्ट आता है साइड टू साइड स्वीप। तो आई हैव सेड यू पास मेथड, PASS, pull the pin, aim at the base, squeeze, and last is side to side sweep. This is a basic understanding of fire. This I've said you basic understanding of fire. Total 8 points. First is what is fire, types of fire, how fire spreads, stages of fire, what are the things you have to check into fire extinguisher, types of fire extinguishers, and how you have to extinguish that fire. That is pass method. Now we are going to come into a new topic, that is fire protection system. Again, being a student, you're going to work in future, right? If you're going to work into industries, institutes, or any place, you have to keep two things in our mind. Whether you're electrical student, architect students, chemical student, biomedical student, or whatsoever, in any branches, two things you have to keep in mind. A fire protection system. Why we need protection system? I have said you earlier, we need fire protection systems in order to save life, to minimize the danger from life and property. As I've said you earlier, many incidents, and there are many incidents happening. Many incidents are happening. I have said you COVID-19 situation, how eight patients have died. You have seen in Sachin GIDC. I can see in Vapi, day by day, everywhere. You can hear in news, you can see in social network sites, there are huge incident happening because of fire. So that thing, a fire protection system should be there. Recently we came to know, see, I'm going to say you, there are n numbers of hospitals in Ahmedabad, n number of hospitals in Baroda, n numbers of hospitals in Surat and all. Many hospitals, they don't have fire NOC. So that means what? If we are going to hospital, if we are going to malls, if we are going everywhere, so here we are playing with our life. That is fact, and that fact we have to keep in our mind. That is the reason what our Parul University, Suprama ma'am, Hetal ma'am, they have said me. So at least they have said me कि स्टूडेंट को ना आप कुछ सब कुछ ऐसा बताओ कि वो स्टूडेंट को एटलीस्ट फायर के बारे में, डिजास्टर के बारे में कुछ समझ पड़े। that's what I'm saying you, आत्मनिर्भर। हमें इस फायर में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। That is a big word which our Prime Minister has given us in COVID-19 situation itself, or I can say for this fire also. So everywhere you go, you have to follow this and you have to keep in mind, अपने आप को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है। तो यही रीजन है। फायर दो पार्ट में डिवाइड है। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज active fire protective system and passive fire protective system. Active fire protective system. Second thing is passive fire protective system.
What is active fire protective system? You might have seen in your college, malls, theaters, buildings. In future you're going to see in industries, you might be having that sprinkler system. आप buildings में देखोगे, कंपनी में देखोगे, बहुत सारी जगह देखो एक स्प्रिंकलर सिस्टम ऊपर लगा रहता है, स्प्रिंकलर्स जैसे लगे रहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम. सेकंड थिंग यू हैव हाइड्रेंट सिस्टम. बहुत सारे आपने देखा होगा, बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, लाल कलर की बड़ी बड़ी पाइप लगी हुई है, दैट इज हाइड्रेंट सिस्टम. हॉज रेल सिस्टम, आप हॉस्पिटल जाओ कहीं भी जाओ, हाइड्रेंट सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, होज रेल सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स, ये सब चीज आती है एक्टिव फायर कंपोनेंट में. एक्टिव फायर कंपोनेंट में क्यों आती है? अगर आग लगती है तो इसका यूज होता है जिससे फ्रॉम विच वी कैन एक्सटिंग्विश अ फायर. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हम आग बुझा सकते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम बड़ा 7 बार इतने बार में आग बुझा सकते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम से आग बुझती है, स्मोक सेंसर को डिटेक्ट करता है, राइट? तो वी हैव दिस एक्टिव फायर कंपोनेंट. नाउ सेकेंड थिंग वी हैव पैसिव फायर कंपोनेंट. ये पैसिव फायर कंपोनेंट में अगर जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैज टू फॉलो एनबीसी गाइडलाइन. हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड्स गाइडलाइन है. इन दैट गाइडलाइन दे हैव टू गो इनटू डीप आल्सो. वी हैव ऑक्यूपेंसी क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग रेसिस्टिव मटेरियल है. हमारा बिल्डिंग रेसिस्टिव मटेरियल होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग होती है. बेस्ड ऑन दैट द आर्किटेक्चर स्टूडेंट दे हैव टू डिजाइन अ बिल्डिंग. उसमें क्या होता है, व्हाट दे डू, दे हैव यू नो फायर अगर आग लगती है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए देयर इज कंपार्टमेंट. वो लोग फायर कंपार्टमेंट जैसा बनाते हैं. वी हैव यू नो साइनेजेस, बहुत सारे साइनेजेस लगे रहते हैं. इमरजेंसी एग्जिट आपने बहुत जगह देखा होगा, इमरजेंसी एग्जिट लगा रहता है. बहुत जगह असेंबली पॉइंट्स होते हैं. सो दिस कम्स इनटू पैसिव कंपोनेंट्स व्हिच गाइड्स अस, और जो आग को फैलने से हम आग ज्यादा ना फैले वो हमको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स. एक्टिव, आई हैव सेड यू, fire extinguisher, hydrant systems, sprinkler systems, alarm systems. If you see anywhere, that comes into active. Now we have passive. Passive is compartment, you can say hose reel, you can say different structures, you can say where which allows to you know minimize the fire, और फायर को स्प्रेड होने से कुछ ना कुछ काम रख सके. तो आर्किटेक्ट स्टूडेंट को तीन चीज मैं हमेशा गाइड करूंगा फॉलो करने के लिए. दैट इज एनबीसी, यू हैव टू फॉलो दैट एनबीसी गाइडलाइंस. सेकेंड थिंग, आपको फायर रेसिस्टिव बिल्डिंग के बारे में पढ़ना होगा. तीसरा, आपको फायर रेसिस्टिव मटेरियल के बारे में समझना होगा. अगर ये तीन चीज आपने समझ ली तो देन इट विल बी वेरी गुड. नाउ तो दैट वाज फॉर यू नो फायर एक्टिव कंपोनेंट सिस्टम. नाउ सी फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, गाइस इलेक्ट्रिकल वाला का बहुत डीप है. In future when we are going to get time, we are going to explain student, I'm going to explain student कि electrical safety from fire or from other source वो बहुत deep में है. And guys, when you are studying into you know electrical field, आप electrical field में पढ़ रहे हैं, electronics के students हैं, biomedical के students हैं, तो with your studies, with knowledge, you should have some skill set. स्किल के सेट क्या होना चाहिए? बिकॉज आप इंडस्ट्रीज में जाओगे तो आपको ये ना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, फायर के बारे में पता होना चाहिए. तो ये चीज धीमे धीमे हमें अपने अंदर कल्टीवेट करनी होगी विद सब्जेक्ट्स, दिस एडिशन इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा. तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमेशा ये बोलते हैं, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए. दैट इज नो फ्रेज, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए. दैट इज द रीजन वी एज RBMS our firm, what we say everyone, be safe and spread safety. As your parallel you have mantra, right? You have be here, be vibrant. So same thing we have RBMS, we have be safe and safety. That is the reason I said for electrical people, sachet rahiye, surakshit rahiye. Now I'm talking about electrical guys. See, electrical student should understand what are the hazards, यानी जोखिम क्या है, किससे आग लग सकती है, राइट? व्हाट आर द रीजन व्हाई कि आग लग सकती है, आग के एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्या रीजन से जिससे आग लग सकती है, यानी कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट या इलेक्ट्रिकल फायर. बीइंग इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर यू नो थिंग्स कि जिससे देयर आर कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट or electrical fire. There are n numbers of things. So we should understand first what are the hazard, यानी जोखिम क्या है, by what fire catches. So we should know that, and we should know addition to that we understood what is hazard, what is जोखिम. Now we have to understand is key level of risks. What is the level of risks? Is if level of risks is nominal, so it's okay. But if level of risks is high,
So we have to take proper care, else there will be fire which will be in loss of our life and in our property. So that we have to keep in mind. For biomedical students, for chemical safety students, see, you guys are working, you guys are studying into chemical safety, biomedical students, or you might be using some chemicals, you're going into lab and all. So something you have to keep in mind. See, if you're dealing with any chemicals or n numbers of chemical, you should go on Google, find out MSDS. MSDS, that is Material Safety Data Sheet. That is Material Safety Data Sheet. That Material Safety Data Sheet, it has 16 sub points. That material data sheet has, if you're talking about ammonium nitrate, you can see in Lebanon what happened ammonium nitrate, right? There are many companies, they use chemicals, it's like explosive chemicals they are using, oxidizer chemicals they are using, flammable chemicals they are using. So you should understand कि भैया कि what is MSDS of that MSDS, it has, you know, there is subheadings, there are total 16 subheadings of MSDS. If you are dealing with any chemicals in your lab itself, please, I'll say to faculty members, staffs and our students, just go and Google, search कि भैया ammonium या chlorine का MSDS क्या है. So you can find it out कि what are the reactivity of that, आग कैसे लगेगी, उसकी explosive limit क्या है, क्या वो explosive है, else it's, you know, oxidizer agent है, क्या वो flammable है या नहीं है, else it's toxic है कि नहीं है, oxidizing है कि नहीं है, radioactive है कि नहीं है. तो right, तो ये चीज आपको MSDS से पता चलेगा. और addition to that, you know, in this we have n number of hazardous goods, n numbers of hazardous goods. उस n number of hazardous goods के बारे में भी हमें इसमें पता चलना चाहिए. Right. अब अभी लास्ट टॉपिक हम ले लेते हैं, दैट इज ERP, दैट इज इमरजेंसी रिस्पांस प्लान. इफ आई एम एडिंग टू दैट इज ERDMP. ERDMP means emergency response and disaster management plan. You might have heard what's going into Baroda now, right? Because of rain, you can see the government, central government, state government, वो हमको बोलते हैं, and they have said कि we have, you know, NDRF की team standby पे खड़ी हुई, अगर कुछ होगा तो बचाने आएगी. So that is a emergency response plan or emergency response and disaster management plan. Being as a student, being as person into college and institute, faculty, everyone should have that thing in mind. What are the emergency? What are the emergency can happen? See, a COVID situation came, that is also emergency, right? So we should understand when we are sitting into a college premises where n numbers of students are sitting in a class, what happened in Surat, they were not aware of emergency planning. So at least we should be, you know, aware of emergency planning. What are emergency plan? What are emergency in that, I can say? It can be a fire, it can be, you know, natural disaster, it can be like earthquake or rain, it can be riots, it can be anything. So you have to keep in mind कि अगर ऐसी situation आई तो कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, कौन आग बुझाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कैसे लोगों को बाहर निकालेगा. तो आपके दिमाग में वो चीज पहले होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है, राइट? तो जब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं होगी तो आप बच नहीं सकते हो, लोगों को बचा नहीं सकते हो. तो आपको वो चीज आपके दिमाग में डालनी पड़ेगी. फॉर दैट आई हैव ऑलवेज इंस्टीट्यूटेड एवरी इंस्टीट्यूट and everyone that when you're having ERP, you know, you should have ERT, that is emergency response team. एक टीम बनानी है जो फर्स्ट एड दे सके, जो आग को बुझा सके, जो लोगों को बाहर इवैक्यूएट कर सके, लोगों को बाहर निकाल सके. तो ये हमारे पास कुछ टीम होनी चाहिए. वो बहुत डीप में है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट मच डीप, बट यस, हमारे पास वो टीम होनी चाहिए जो आग बुझा सके. सेकंड, जो फर्स्ट एड मेजर्स, फर्स्ट एड दे सके लोगों को, जो लोगों को बाहर निकाल सके, या जो कोऑर्डिनेशन करके एम्बुलेंस बुलाना है, 108 बुलाना है, और आपके ऑलरेडी पारुल सेवाश्रम है तो डॉक्टर्स बुलाना है, ये बुलाना, तो हमारे पास दिमाग में वो प्लान लेके चलना होगा. तो प्लान के साथ टीम एक्टिव रहनी चाहिए. नाउ आई विल से, नाउ टेक एन एग्जांपल, अ स्टूडेंट और स्टाफ, दे सेड कि हम तो एक्टिव है भैया, हम ये काम कर लेंगे. सी, सेइंग फ्रॉम अ माउथ एंड इंप्लीमेंटिंग इट इज वेरी डिफरेंट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अ टीम शुड हैव सम क्वालिटीज. वो क्वालिटीज क्या है? उसको कुछ फोबियाज नहीं होने चाहिए, राइट? उसको कुछ समझना चाहिए. व्हाट क्वालिटी आई हैव सेड, दैट इज फर्स्ट 3C प्रिंसिपल. पहला C, कूल, calm, confident.
फर्स्ट इज कूल काम एंड कॉन्फिडेंट। अगर कुछ भी सिचुएशन हमारे प्रेमाइसिस में होती है, वी हैव टू कूल, ठंडा होना है, काम, पेशेंसली, हर बार नहीं बचाना है। ऐसा नहीं छोटी सी आग लगी तो बड़ा सा अलार्म बचा दिया, अनाउंस कर दिया, भागो भागो भागो, हमने भगदड़ मचा दी, वो नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी कूल, calmly, we have to understand the situation, and third thing is cool, calm, confident. If we are confident enough कि yes आग लगी है, हम आग बुझा सकते हैं, लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं, तो मेरी पूरी टीम को they have to start that process of saving or protecting everyone, ये रखना चाहिए। now अब टीम कॉन्फिडेंट है, they are ready to extinguish the fire, team is confident, they are going to evacuate the building or premises, team is ready, they are going to give first aid. Now that team who is dealing with that, they should have some more quality, that is 3S. First is safety. हमारी safety भी important है। You guys are not a firefighter, you guys are not a first aider. See, if you're dealing with that with the confident, think आपकी safety भी important है, तो हमें सेफ्टी के साथ वो काम करने आगे बढ़ना है। सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंड द सीन, what scene is, as I've said you earlier, समझो पहले आग किधर लगी है, it's on electrical thing, it's on paper plastic, और लैब में आग लगी है कि बिल्डिंग में आग लगी है, कहाँ पे आग लगी है, कैसे आग लगी है, you should understand scene. And third thing is situation, the situation has to be handled by team, वो पूरी टीम को situation handle करनी पड़ेगी, राइट? अब टीआरपी में सबसे पहले एक मान लो कुछ भी टचवुड, कुछ खुदा ना करे कुछ हादसा हो, लेकिन मान लो कुछ बना कुछ हादसा हो गया, तो क्या करना हमें? अगर कुछ हादसा अगर होता है, मान लो, सबसे पहले जस्ट ऑब्जर्व इट, देखो कितना बड़ा हादसा है, कुछ अगर आसपास के अलार्म सिस्टम दिखता है, आसपास आप अलार्म सिस्टम नहीं है तो आप चिल्ला सकते हो कि आग लगी, पर इतनी भगदड़ मत मचाना, लोगों को समझना पड़ेगा उस चीज को। तो आपको अलार्म सिस्टम को बजाना है या लोगों को बताना, इतला करना है कि दिस has happened, now we have to evacuate. So as soon as you are addressing a people through alarm system or through a mic or phone, whatever, now second thing is evacuation. आपको लोगों को उस premises से बाहर निकालना होगा। That is the reason, my friend, anywhere you go, on theaters, mall, colleges, institutes, company, everywhere there is assembly point. Everywhere we have assembly point. Assembly point का यही मतलब होता है, if there is any emergency, everyone, those who are over there, they have to gather there, उनको वहां पे जाके इकट्ठा होना है, तो वहां पे हमें जाना है। एक कॉलेज का मैनेजमेंट अगर पता होगा हमारा n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या n नंबर चीज, तो हमको उसका हेड काउंट भी करना है, और ये देखना है कि वो सिचुएशन जो अंदर है, पता होना चाहिए कौन कौन अंदर है, मेरी फायर की टीम अंदर है या फर्स्ट एड की टीम आसपास कहीं पे है, या जो टीम, वी शुड हैव ट्रांसपोर्टेशन टीम आल्सो। ट्रांसपोर्टेशन मींस अंडरस्टैंड इंजर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्ट करना है, हाउ यू हैव टू इवैक्यूएट देम, कैसे उसको उठा के ले जाना है, कैसे उसको ना मुझे बैक पे ले जाना है, स्ट्रेचर पे ले जाना है, तो दैट दैट प्लानिंग should be there, वो टीम को आना चाहिए, और टीम को आता भी बहुत जगह। Before I think so 1 year I have taken training in your college, face to face training ली थी, there I have taught around about 150 or something students को कि how they have to evacuate, how they have to transfer a student or someone if it's fire हुआ है, कुछ हुआ है, इंजरी हुई हो, तो वो चीज हमने देखा था पहले। अब इंजरी हुई है तो इसमें हमें बंदे को बाहर ले जाना है, इंजरी हुई उसको असेंबली पॉइंट पे ले जाके उसको फर्स्ट एड देना है। कोई भी बंदा वापिस उस प्रीमाइसेस में नहीं आएगा। अगर आपको लगता है मेरा मोबाइल फोन रह गया है, मेरा बैग रह गया है और मेरा बच्चा वहां पे रह गया है, जस्ट यू शुड इन्फॉर्म दैट रेस्क्यू टीम कि दिस इज द सिनेरियो एंड दिस थिंग हैज हैपेंड। तो आपको ये चीज लोगों को बताना है। तो ये स्टूडेंट्स, सो फायर और डिजास्टर्स में आपको ये चीज माइंड पर रखना है। Now again I'm going to into emergency. See, we have heard a lot about COVID-19, but yes, again I'm giving a short form. In this situation, COVID-19 situation, in Corona situation, follow SMS. Please follow SMS. See, it's good. It's good. I've seen people. Because I'm going everywhere for training session. I'm even doing webinar, doing face-to-face training session. People are so much like बहुत easy हो चुके हैं. They are roaming here and there. You should understand, guys. अभी भी प्रॉब्लम है तो उसको नो डाउट लड़ना है। तो देयर इज 3 जोन, देयर इज फियर जोन, दैट इज गॉन। नाउ सेकंड थिंग इज लर्निंग जोन, तो हमारा लर्निंग सही तरह से होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज ग्रो जोन, तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि भाई हमको दिमाग आ चुका है, हमने लर्न कर चुके हैं,
अब ये हमको ना आए तो हमें कुछ 3 चीज हमें करनी होगी, दैट इज SMS. दैट इज SMS. एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग. प्लीज माय फ्रेंड, प्लीज माय फ्रेंड, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे डॉक्टर्स बाबा बोल रहे हैं SMS सोशल डिस्टेंसिंग करना है. लास्ट थिंग इज एम, प्लीज वेयर अ मास्क, प्लीज वेयर अ मास्क. It's very important and you have to wear it properly, not in fashion sense. Please wear it properly. Third thing is sanitize. Please sanitize. प्रॉपर करो, अच्छी तरफ से हाथ धो. तो SMS हमें फॉलो करना है. लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेक इज आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय स्टूडेंट्स, लास्ट हम एक प्लेज लेंगे कोविड को रिलेटेड. मुझे पता यू कैन, आई कैन हियर यू, बट यस, हम एक प्लेज लेंगे. उस प्लेज में जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे ही ट्राई करना है मेरे पीछे पीछे बोलने का. अगेन आई रिक्वेस्ट यू, ये प्लेज है, आपको प्लेज आपसे ट्रू होना होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू से प्लेज over here. You have to say pledge by yourself. Please do one thing. We are going to start a pledge. Please do one thing. Keep your right hand on your heart. Please keep your right hand on your heart. Yes, done. Please keep your right hand on your heart. I'm going to start that pledge. So this is a pledge for COVID-19. I'm going to start. You have to speak back on me. Perfect. So I'm going to start. मैं स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन तथा हर संभव प्रयत्न करूंगा. मैं पूरी निष्ठा से संकल्प करता हूं कि मैं स्वयं को समक्रम रहित सुरक्षा, स्वस्थ और पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित करूंगा. मैं स्वच्छताकरण नियमों, विनियम, प्रक्रियाओं का पालन करने का हर संभव प्रयत्न करूंगा और किसी प्रकार की संक्रमण एवं दुर्घटना ना हो ऐसा सुनिश्चित करने का बचाव दृष्टिकोण और आदत विकसित करूंगा. मैं स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में स्वच्छीकरण और संक्रमण रहित रोकथाम के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा. जय हिंद. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Yes, Now we will go ahead with some questions. perfect, We perfect, have a perfect. question with a student that what is the best way to avoid fire at the workplace? What is the best practice to avoid fire at workplace? I'll say you. Thank you so much. You have asked a very good question. See, when you're going at a workplace, please, I have said you should have basic knowledge. What are the hazard? And you went to a workplace, right? Workplace can be you're going to electrical company, electrical manufacturer, steel, chemical, boiler, gas industry, CNG station, gas station, right? You should have where you're going at work. मान लो अब एग्जांपल देता हूं मैं, आप गैस स्टेशन पे काम करने गए, राइट? एट दैट गैस स्टेशन व्हेन यू आर गोइंग देयर, basic understanding of hazard should be there. As a person, as a customer, as an employee, I should have basic understanding of hazard, यानी जोखम जिसके कारण बनाव बन सकते हैं. I should understand what are the hazard जिसके कारण बनाव बन सकते हैं. अब बनाव ना बने, एक्सीडेंट ना हो, तो सिंपल थिंग व्हाट वी सजेस्ट टू अ पर्सन, यू हैव टू फॉलो 4E प्रिंसिपल. You have to follow 4E principle. First E is आपको बंदे को एजुकेट करना पड़ेगा. You have to educate person, those who are working into that premises, that workplace. You have to educate them about safety, about hazard, about fire, about your workplace environment. What are the things it's going to catch a fire? तो आपको एजुकेट करना पड़ेगा. Training is required. Second thing is engineering control. You should keep a engineering control. जितने भी tools, equipment, machineries आप यूज करते हो वो सही तरह से होना चाहिए. SOPs जो है, SOPs है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो आपको सही तरह से फॉलो करनी है. फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड थिंग इज इंजीनियरिंग कंट्रोल. नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट, एनकरेजमेंट.
अगेन एंड अगेन यू हैव टू एनकरेज पीपल. जैसे पेट्रोल पंप पे, सीएनजी पंप पे जाते हो, एनकरेज करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, प्लीज मोबाइल फोन यूज ना करो, ये ना करो, वो ना करो. तो एनकरेजमेंट. इफ इन अ वर्क प्लेस लोग नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, तो एनफोर्समेंट की पॉलिसी आती है. लेकिन यस, ये हमें 4 चीज तो करना है. उसके साथ आप कोई भी प्लेस में जाओ, आप देखोगे अभी कोविड सिचुएशन में भी एग्जांपल दूं मैं आपको, डॉक्टर्स पीपीस पहनते हैं, हम मास्क पहन रहे, राइट? तो दैट आर द रिक्वायरमेंट विच वी हैव टू डू इट वर्क प्लेस. खतरों को पहचानिए, खतरे को पहचानने के बाद उस पर कैसे आपको एक्शन लेना है, उसके लिए ट्रेन, इंजरिंग कंट्रोल और एनकरेजमेंट करना जरूरी है. दैट इज द रीजन आई हैव सेड यू, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए. यस, यस मैम, एनीथिंग एल्स? Yeah, sir, actually we have one other question that what to do if fire spreads and block the way, and then what should our next move in this situation? What we should do if fire block is Fi- block? हाँ. Fire Fire. blocks our way. Yeah. Perfect. My friend, same thing happened at सूरत. सूरत में सेम चीज हुआ था. जो स्टेप्स लगे हुए थे वहां पे फायर ने उसका ब्लॉक कर लिया था. मैंने वही बोला आपको, सी व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ समथिंग, वो सही तरह से डिजाइन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे अभी तक सही तरह से डिजाइन नहीं है. कितने सारे जगह पे आप देखोगे, कितने सारे जगह पे आप देखोगे कि उन्होंने उन्होंने क्या बोलते, सही तरह से एनओसी भी नहीं ली है, वो ऐसे ही काम कर रहे हैं वहां पे, राइट? अब मैं आता हूं उसमें. मैंने आपको पहले बोला था कि जब भी मैं किस जगह जाता हूं, कि जिस जगह आप जाते हो, दैट यू शुड थिंक अ एस्केप रूट. हमें हमारे दिमाग में पता होना चाहिए अगर हमारे यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ है, हमारे यहाँ पे एस्केप रूट क्या है. अगर क्लासरूम में आग लगी है तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे एस्केप रूट क्या है, राइट? अभी क्या होता है जब आग लगती है ना, मैंने आपके अलग अलग आपको स्टेजेस बताए. स्टार्टिंग स्टेज बताया था, इग्निशन बताया था. सेकंड मैंने आपको बोला था फुल्ली ग्रोथ, डेवलप, डीके, ये बताया था, राइट? जब आग लगती है, जिस जगह पे वो पूरा ब्लॉकेज हो रहा है, तो ट्राई करो वहां से कोई अदर कोई एस्केप रूट हो, या ट्राई करो कि हमारे पास वहां पे कोई खिड़की वगैरह हो, वहां से कुछ जंप नहीं मारना. अगेन, जंप नहीं मारना है, आसानी से निकलने का कोशिश करना है. लेकिन मैं आपको पहले बोलना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको ERP बोला था, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान आपको बताया था, कि वो टीम को तुरंत ही फायर ब्रिगेड में कॉल कर देना है, कि हम यहाँ पे छोटी मोटी आग में बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं. जब ज्यादा आग लगती है तो हमें फायर फाइटिंग की टीम की जरूरत होती है. लेकिन हाँ, एक और चीज होता है, जब आग लगती है ना, तो उसकी लपट तो निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें स्मोक निकलता है. स्मोक यानी धुआं. दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड. धुआं निकलता है. उसके सिचुएशन में क्या कर सकते, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि एक रुमाल लो, पानी से गीला करो, मुंह पे लगा लो. बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कि हमें धुआं धुआं मुंह में जाने की कोशिश, रुमाल लोगों के पास नहीं होते हैं. तो व्हाट वी डू इज, हमारा टी शर्ट हमने पहनी हो, टी शर्ट से मुंह ढक लो, या हाथ है, क्लोज योर नोज एंड माउथ, उसको क्लोज करके और उस प्रीमिसेस हम जा सकते हैं. यस, एनीथिंग एल्स मैम? Okay, thank you so much, sir. Now I'm going to invite Mr. Vijay Lalwani, sir, our institute coordinator, for vote Okay. of thanks. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर. प्लेजर. सर बहुत आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया एसएमएस का, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा होता है कि एसएमएस इज डिफरेंट थिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये एसएमएस वर्ड जो है अभी यही रहेगा, कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन. सर थैंक्स अ लॉट, एंड ऑन बिहाफ ऑफ पारो यूनिवर्सिटी आई थैंक यू पारो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, इवेंट सेल डिपार्टमेंट, वेबिनार सेल डिपार्टमेंट, our academic director Mr. Mahesh Bhatt sir, principal ma'am Ruchi Srivastava ma'am, and lastly thank you Suprabha ma'am and Vishakha ma'am, and also department of biomedical, and thank you all students who attend this lecture, very useful lecture I must. Thank you तो so sir, much. कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कोविड खत्म हो जाए और आप हम फेस टू फेस बात करें, आप फेस टू फेस हमारे स्टूडेंट्स के साथ interaction करें. So already actually we have delivered a session in your college before for electrical department. There we were having like 150. हमने certificate भी issue करे थे लोगों को, and we can do face to face architecture student के लिए बहुत important चीज है ये, कि because we are studying a subject, तो उनको ये चीज फायदा होगा कि उनका ना building material कैसा होना चाहिए, construction कैसा होना चाहिए. Then we can have for chemical, we can have separate section for electrical. We can work it on, sir. But after this situation, क्योंकि ये situation से बाहर निकलना है. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, for sure. Thank you very much. So much. Pleasure. So, thank you so much, Amit sir, and thank you everyone. We appreciate. Thank you so much.
Thank you so much for this. All the best. Thank Parul is you. we vibrant. Yes. Yeah, be here, be Stu- vibrant. yes, student, you have to rock it, and we have taken a pledge also. We have taken a pledge today, so you have to follow that pledge. Please follow that pledge. Please follow SMS. Please follow safety guidelines for your life and for your family. So be safe and spread safety. Be safe, spread safety, and again I will say, be positive and spread positive. Thank you so much. Jai Hind. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind.